हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं ताउस रिजवी यहाँ पर शिवाजी पार्क पे हूँ। यहाँ पर मैं रिएक्शंस लेने आया हूँ। इंडिया बैक टू बैक न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैचेस हार गई, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्पेशली आफ्टर डिफीटिंग बांग्लादेश 2-0 एंड द मिराक्युलस विन इन कानपुर। आर यू सरप्राइज्ड? पहले नाम बताइए अपना। जॉन, अरिजीत, सामी, वेंकी। क्या इंडिया हार गई? आई मीन, आर यू सरप्राइज्ड? क्या आपका क्या निकल रहा है? बैक टू बैक डिफीट्स, 2-0 बेंगलुरु में हारे, पहले ये किए कि टॉस हार गए, टॉस जीत के बल्लेबाजी की ओवरकास्ट कंडीशंस में, और अब ये मैच हार गए। क्या लगता है? एक्चुअली पूरा इंडिया के मतलब बोल सकते हैं अपन कि स्पिनिंग विकेट था जो भी था। ये मैच जो अभी हारे हैं, इंडिया को एक्चुअली जीतना चाहिए था, क्योंकि 3 स्पिनर थे अपने पास, वो भी टॉप स्पिनर थे। फिर भी उन्होंने बैटिंग अच्छा किया, जो न्यूजीलैंड बैटिंग किया है वो बहुत अच्छा किया है। सो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बॉलिंग लाइन एंड लेंथ थोड़ा और अच्छा होता तो शायद मिल जाता अपने को। क्या लगता है कहाँ गलत हो गया? आई थिंक उन्होंने बराबर पकड़ा कि अपने पास 3 स्पिनर थे एंड टॉप 10 स्पिनर्स में से एक थे, एंड बोथ आर टॉप 10 स्पिनर्स डिड नॉट वर्क। सो इंस्टेड वॉशिंगटन सुंदर चले, अगर तीनों जन एक साथ चल लेते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्कोर लाइन ऑल टुगेदर। ऑन द कॉन्ट्ररी, न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर्स चल गए। बट व्हाई टू ब्लेम स्पिनर्स? दे हैव बीन विनिंग यू मैचेस, राइट? बैटिंग फेलियर नहीं है? Yeah, it's absolutely a batting failure. Bowlers have done a very good job. In fact, India in the home soil आना वो बहुत ही खराब है। आउट ऑफ द इंडिया खेलते तो हारते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। होम सॉइल में हारना, इट्स वेरी embarrassing. Yes. Embarrassing, especially after defeating England without Kohli, without KL Rahul. It's very embarrassing. But विराट कोहली और रोहित शर्मा परफॉर्म ही नहीं कर रहे, आपका क्या कहना है? और पाकिस्तान बाय द वे जीत गई 2-0 एक पहली मैच हारने के बाद। Yeah, inshallah boys played really well. Then too, yeah, after World Cup it's been a rough phase going for Virat Kohli as well as Rohit Sharma. Their averages are pretty low comparatively before the World Cup. Yeah, they will bounce back, I guess, and in the middle order should show some passion on building this innings. Are you being diplomatic कि they will bounce back? क्योंकि कंसिस्टेंसी तो कहीं नहीं दिखाई दे रही मुझे। विराट कोहली की कंसिस्टेंसी दिख रही है या रोहित की दिख रही है? From my side I will say विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ईद की चांद की तरह है। कभी एक बार खेल लिए तो खेल लिए, नहीं तो 10-15 मैच तो उनसे कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकते। उनका 10-15 मैच के बाद एक हाफ सेंचुरी या तो एक सेंचुरी आता है, कंफर्म है। ये मेरे को इतना पता है, एज ए क्रिकेट सेंस में बता रहा हूँ, मैंने देखा भी है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? MS धोनी को लेकर मैं रोहित शर्मा को इतना ही बोलूँगा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा खेल के आना चाहिए, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा बैटिंग करना चाहिए। इंटरनेशनल खेल रहे बट उनको थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, और थोड़ा डोमेस्टिक खेल के आएंगे तो मेरे हिसाब से बैटिंग थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। You have a different solution? I mean, no. Rohit Sharma has been performing on and off. Performing in Test cricket. I think as an opener, are you convinced that Rohit Sharma is a very good opener, compact? take his last 10 innings and then we'll talk. If the numbers are clear, then we will be able to talk over here. Virat Kohli, yes. Virat Kohli, even I agree that he is out of form. And so what's the solution to it? I think youngsters need to pick up. As simple as that. It's a new generation that should come. Virat Kohli is 35. 2-3 साल खेलेगा. I mean, वो 2-3 साल भी अगर हम उसी से एक्सपेक्ट करें कि वही जीतेगा, जब सचिन 35 पे था, विराट ऑलरेडी बन गया था. It's time for another player to step up in his shoes. फोकस कहीं लैक हो रहा है आपको लगता है? यंगस्टर्स भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। शुभमन गिल हैज बीन इनकंसिस्टेंट, फर्स्ट इनिंग्स में फेलियर हो रहा है। सरफराज 150 किया, बैक टू बैक फेलियर्स है ये मैच में। Youngsters are playing well, but in a condition like this inside India, they should play in every matches. They are performing around 4 to 5 matches in between 1 matches they play, but that is not a consistency they have to be. BGT जीतेंगे इसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज आने वाला? Hopefully yes, hopefully. इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? कहाँ से? अभी इंडिया है तो लाना ही पड़ेगा। नहीं, प्रैक्टिकल सोचते हो कि रियलिटी सोचते हो? प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। They will get together, but this might be an reality check and they will bounce back, pretty sure. But these are the wickets that we are supposed to play on. I mean, these are the turning tracks that we are strong on. इसी ट्रैक्स में आपने इंग्लैंड को हराया बिना विराट कोहली के, बिना KL राहुल के, तो यहाँ कहाँ गलत हो गए? गलत कुछ नहीं है, एक्चुअली यंगस्टर को थोड़ा चांस देना चाहिए, थोड़ा ब्रेक, मेरा जो था वही है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, यंगस्टर को चांस देना चाहिए।
बट स्पिनिंग विकेट में हम बैट्समैन को ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत ख़राब खेल रहे हो. कोई भी बैट्समैन हो स्पिनिंग विकेट में बहुत डिफिकल्ट होता ही है. Aren't we supposed to be called the best spinners, best against spinners? Indian As I said earlier, it is. Yes. They had top 3 spinner, best spinner, but only Washington Sundar was playing well. नहीं, I'm talking about the batters. नहीं, बाकी मैचेस तो हर मैच जो हमारा डोमिनेंस रहा है स्पिनर्स की वजह से रहा है, राइट? अश्विन एंड जडेजा. बैट्समैन ने मैं बैट्समैन में अगर सिर्फ 2 ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो गलत हो जाएगा ना. किसकी गलती राहुल है, शुभमन गिल है, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. हाँ, तो किसकी गलती है इसमें? गलती तो टॉप ऑर्डर की है एंड यू विल हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, बट ओनली द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कैन नॉट टेक इट. Thank you so much. मैच का मुजरिम कौन था आज के? I'm not talking about your match which you were playing, but today India lost to New Zealand. Who would you say that is the match का मुजरिम? I did not see match today because of my match. Very good. But क्या लगता है विराट कोहली नहीं, अभी उन लोग बहुत ज़्यादा ये थे कि मतलब हम लोग खेल सकते हैं ये स्पिन ये सब, इसके वजह से उन लोग का थोड़ा ये हुआ. बाकी सब तो अच्छे ही खेल रहे थे. बाकी अपना कौन अच्छा खेल रहा था आपको देखा? ये यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा मार रहा था. उसके बाद थोड़ा जडेजा आके खेला, फिर बाकी लोग थोड़ा मतलब ये हो गए स्पिन की वजह से. बाकी सब अच्छा खेले. कलेक्टिव बैटिंग फेलियर बोलेंगे इसको? Sir, I would say that these guys are playing a lot of 2020 these days. There was a time like Rahul Dravid, Pujara, all these guys were made only for test cricket. However, these guys are playing so much 2020, wanting to score 200, 250, which has spoiled the test cricket, I would say, is because leave the ball. I think so these guys have forgotten they want to go and middle even the 4th, 5th stump balls, and you know the actual test cricket which is leave the ball, I think so, is left behind. So they need to focus more on these 40 overs, 50 overs and test matches more than 2020, because I feel 2020 games are spoiling the actual cricket which is test cricket. So yeah, exactly, I agree with you because you come from that era. आपकी भी दाढ़ी सफ़ेद है, मेरी भी सफ़ेद है, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं. मगर ये यंगस्टर क्या अग्री करता है इससे? Yeah, agreed. But given an additional point, ki where are the Ranji players? The guys who are actually playing Ranji, where are they? They have. I think they'll do much better than what our present Indian team is doing, because they are all focused in T20 and ODI stuff. But the guys who are actually playing Ranji, they are more experienced with the red ball cricket. They know how to survive for 2 days, 3 days. So I think they should be given more chance rather than what we are doing. The textbook Indian cricket team won't do right now. So you're not ready to blame Virat Kohli and Rohit Sharma? No, absolutely no. But they haven't scored runs. See, there is a failure. Every batsman has a form and it goes up and down. I would say collectively as a team, we lost with 2 players, mainly Pujara and Rane. We dropped them pretty earlier than the new guys were ready, especially with Shubman Gill and even with Yashasvi Jaiswal. We need to give them some more time, but there was no third batsman who was ready. Unfortunately, KL Rahul didn't click for us when we had a good lead in the first test. So probably we are lacking out there. So what is the solution? क्या है solution इसका? जब विराट फॉर्म में नहीं है, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, कोई फॉर्म में नहीं दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है? I think we need to introspect the Indian team. We need to have horses for courses. T20 players can't blend it in Test cricket because the mentality, mindset is very different. Second thing, we can't absolutely blame the spinners, our bowlers. We can't blame them at all. We have won matches because of them over the years. Exactly. At last least 10, 12 years. We can wait for Shami, but in the end, everyone does their job. Batsmen, we need to pick a very good squad from the Ranji side because they are hardened to play in our dust ball areas, and you can see the chinks in the armor of all our current batsmen who are trying to replicate bass ball. They're trying to do gum ball or whatever. So that is where they got absolutely confused कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें baseball के era में ये भी करना है. Do just play your own cricket. I think there are two guys who can be a good, rather 3 guys. One is Abhimanyu Ishwaran, second is Ruturaj Gaikwad, and third is Sai Kishore. But why are they not given the chances that they deserve? I believe Abhimanyu Ishwaran is in the Australia squad, BJT squad. He is there. But over the time, and even Sai Kishore
and Ruturaj Gaikwad is in India A teams right now. So those guys are getting the chances, but we need to be patient and see how they shape up with the balls. But are you surprised with New Zealand defeat? ये तो series चली गई हाथ से, but are you surprised that coming at home? Sir, I'm not, because we have always struggled with one team, and that is New Zealand. When it comes to the top two, New Zealand and India have always been there. But I have seen one thing, may it be 2020s, may it be Test cricket or one-dayers. New Zealand are a better side when it comes to being complacent in difficult situation. In fact, Australia also doesn't trouble us so much how much New Zealand does. So we need to focus, and also over dependence on left arm spinners like Jadeja. I think so Kuldeep Yadav, who is a proper bowler, and rather than an all-rounder, a proper bowler was required, who, as you see, New Zealand, there were two left armers and they bowled brilliantly and got the wickets. But New Zealand has always been a side who has given a tough competition to Team India. I would like to add, I quote Simon Dool, who recently said that everyone needs to understand Indian team can't play spin as well as other teams. They have to prep and they have to understand their own weaknesses. India are not invincible. We have to learn to play. Anyway, thank you. So these were cricket fans who came up with amazing answers. I really enjoyed talking to them, and they are more or less agreed that the failures of Virat Kohli, the failures of Rohit Sharma, it's a total batting failure, rather complete team failure, which led to New Zealand defeat. And hence it will be difficult for them to bounce back during the BGT, but then they are hoping that India would win Border Gavaskar series, even though they might have lost this particular series against New Zealand. Thanks for watching. Do subscribe Cricket Next. We are going to get you lots of updates and stories from the world of sport cricket, and of course the Maidans of Mumbai. अभी के लिए ताउस रिजवी को दीजिए इजाजत. Goodbye.